And now continue with the next topic, cell division. You know, new cells are formed in organisms in order to grow. New cells कैसे बनती हैं organisms में? या तो body grow कर रही है, to replace old, या फिर किसी old को replace करना होता है तब new cell बनती हैं, या फिर कोई cell dead या injured हो जाती है तब new cell का formation, and to form gametes required for reproduction. The process by which new cells are made is called cell division. वो process जिससे new cell बनती हैं उसको हम कहते हैं cell division. There are two main types of cell division. First is mitosis and second is meiosis. Firstly we will learn about mitosis and then meiosis. Okay. The process of cell division by which most of the cells divide for growth. जिसमें सेल किस लिए डिवाइड करती हैं? ओनली फॉर ग्रोथ. यू हैव स्टडीड बिफोर ना. इज कॉल्ड माइटोसिस. सी, in this process, in mitosis, each cell called mother cell. Mother cell divides to form two identical, see this is same na, these are the chromosome, green है ना, they divide in two parts and this divide in two parts. One part इसमें, इसका वन पार्ट इसमें, इसका वन पार्ट इसमें, इसका वन पार्ट इसमें, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. तो इन दोनों के वन वन पार्ट इसमें चले जाएंगे. तो ये क्या हो जाएंगी? आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मीन सेम. डॉटर सेल, दे बोथ. The daughter cell have the same number of chromosomes. See, there are 4 chromosomes and here also 4 chromosomes as mother cell. Mother cell में भी 4 थे. देखिए 1 2 3 4. It helps in growth and repair of tissues in organisms. Specific cells of reproductive organ or tissues in animals and plant divide to form gametes, which after fertilization give rise to offsprings. कुछ specific cell होती हैं reproductive organs की या tissues की animals में और plants में, वो divide करती है क्या बनाने के लिए? gametes बनाने के लिए, जो fertilization के बाद किसको जन्म देगा? offspring को. They divide by a different process called meiosis. They divide by a different process called meiosis, which involves 2 consecutive division. इसमें 2 consecutive division होंगे. See, पहले ये division हुआ, फिर ये division हुआ. इस वाली सेल से इसका division, इस वाली सेल से ये divide हुए. Thus, it produce 4 new cell. This is new cell. This is also new cell. This is also new cell. This is also new cell. 1 2 3 4. In mitosis, only 2 identical daughter cell are formed from one mother cell. But in meiosis, 4 new offspring are formed. It produces 4 new cell instead of just 2. The new cell only have half the number of chromosomes. See here, there are 4 chromosomes in mother cell, but daughter cell contain only 2 chromosomes. इसमें क्या हो जाता है? क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाती है. देखिए माइटोसिस में क्या था? 4 क्रोमोसोम्स थे, बट डॉटर सेल में भी 4 थे. इसमें क्या है? मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है, बट जब डॉटर सेल बने तो उसमें 2 क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो गई. See here, this is green part and green part. एक green part इस वाले डॉटर सेल में, फिर एक green part इसमें. This is blue part. देखिए blue part इसमें, फिर blue part इसमें. देखिए हाफ ये blue part है, तो हाफ एक blue part इसमें आया, एक blue part इसमें. ये हाफ 2 green part है, ये green इसमें, ये green इसमें. जब इसके डॉटर सेल बने तो देखिए 1 blue 1 green 1 green.
half green, half green, half blue, half blue. In this, full green, full green, full blue, half green, half green, half blue, half blue. Okay. By this, the 4 new cell are formed from one mother cell. In mitosis, from one mother cell, only 2 identical daughter cells are formed. The chromosome number in this are same, 4 chromosome, 4 chromosome. In meiosis, chromosome number become half.